हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू CivTech Simplified। दिस इज इंजीनियर इमरान अजीज। मैं आपको अपने चैनल CivTech Simplified का खुशामदीद कहता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सर्वेइंग एंड लेवलिंग क्वेश्चन नंबर 111 टू 120। These 10 questions have been designed for you to prepare for the GAT exam and SSC JE exam. If you are preparing yourself for any sort of job interview or competitive exam, so this video is for you. इस वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखिए और अपनी रहनुमाई हासिल कीजिए। यू नो कि सिविल इंजीनियरिंग में सर्वेइंग एंड लेवलिंग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्जाम में इसमें से क्वेश्चंस जरूर आते हैं। सो बढ़ते हैं स्क्रीन की जानिब, जहां पे एक प्रेजेंटेशन के थ्रू फर्दर ये 10 क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए जाएंगे और फिर मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब। सो सर्वेइंग एंड लेवलिंग SSC JE में पार्ट 12 के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 111 से 120 तक, इन विच क्वेश्चन नंबर 111 says that the ratio of focal length of the objective to that of an eyepiece of a telescope is called its option A definition, option B brightness, option C sensitivity, and option D magnification. So focal length of objective to the eyepiece is called ratio is called magnification. D is the correct answer for this question. 112. The power of a telescope to form distinguishable images of objects separated by small angular distance is called option A definition, option B brightness, option C sensitivity, and option D resolving power. So that power of telescope in which images are distinguished between each other is called resolving power. D is the correct answer for this question. 113. The magnification of a telescope is the ratio of angle subtended at the eye by the visual length of the object to that subtended by the object. Option A correct, option B is incorrect. So yes, this theorem is correct, so A is the correct answer for this question. Question number 114. The capacity of showing small angular movements of the level tube vertically is called its sensitivity. Option A is right and option B is wrong. So capacity or capability of showing small angular movements of the level tube in a vertical direction is called its sensitivity. So A is the correct option, which is right. 115. In order to measure a horizontal angle more accurately than a vernier, option A method of repetition is used. Option B, method of reiteration is used. Method of deflection angle is used. Method of double observation is used. In order to measure a horizontal angle more accurately than a vernier, method used in that is method of repetition. So A is the correct answer. 116. In measuring horizontal angles, the theodolite should be turned, option A, clockwise from the forward station to the back station, from the back station to the forward station. Option C, anti-clockwise from the forward station to the back station. Option D, anti-clockwise from the back station to the forward station. So B here is the correct option. In order to measure a horizontal angle, theodolite should be turned clockwise from the back station to the forward station. B is the correct answer. 117. The method of reiteration of measuring horizontal angle is generally preferred when several angles are to be measured at a particular station. Option A is yes and option B is no. So yes, the method of reiteration of measuring horizontal angle is generally preferred when several angles are to be measured at a particular station. जब एक स्टेशन के ऊपर एक से ज्यादा एंगल्स आपने मेजर करने हो तो ये मेथड यूज होता है. So A is the correct answer, which is yes. 118. An angle made by a surveying line with the prolongation of the preceding line is known as option A direct angle, option B vertical angle, option C horizontal angle, and option D deflection angle. So that angle is called deflection angle, in which is made by survey line with the prolongation of preceding line. So D is the correct option. 119. A deflection angle in a transverse is equal to option A difference between the included angle and 180, difference between 360 and included angle, option C sum of included angle and 180, and option D none of these. So A is the correct option. Deflection angle is in a reverse is equal to difference between the included angle and 180 degree. So A is the correct answer. 120. The deflection angle may have any value between option A 0 to 45 degree, option B 0 to 90 degree, option C is 0 to 120 degree, and option D is 0 to 180. So deflection angle एक सर्वे इक्विपमेंट के ऊपर
0 to 180 की डायरेक्शन के अंदर लिया जा सकता है। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, दिस वाज आवर पार्ट 12 ऑफ आवर ऑनगोइंग वीडियो सीरीज ऑन सर्वेइंग एंड लेवलिंग, जिसमें हम 10 क्वेश्चंस आपके साथ हमने शेयर किए। आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए बेनिफिशियल होंगे फॉर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर द गेट एग्जाम और एसएससी जेई। अगर आप इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, सो सिफ्टेक सिंप्लीफाइड के ऊपर आपको अ लॉट ऑफ वीडियोस सिविल इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर मिलेंगी। सो उन वीडियोस को मुकम्मल देखिए, अपने फ्रेंड्स और कम्युनिटी के अंदर इनको शेयर भी करें और हमारी फैमिली का हिस्सा बने बाय सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां पे हम नेक्स्ट फर्दर 10 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।